8, last question for this year. F of 0, 1 is a continuous function differentiable on 0 to 1. Prove that f is a linear function of x plus b, there exists a value for which this inequality exists. तो क्या करेंगे, assume that ये जो value है भाई ये less than f1 minus f0 है. So for all t between 0 to 1, तो ये fractional में है. So if f1 equal to f0, then f is constant. So assume that f1 greater than f0. So by mean value theorem अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे MVT less than equal to f1 minus f0 whole into t lies between 0 to 1. अब assume करते हैं कि ft minus f0 less than f1 minus f0 into t. ये फॉर्मेट में अगर आया, सो कंसिडर द फंक्शन एक अगर ले लेंगे gs इक्वल टू fs माइनस f0, s मान लेते t और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, तो g डैश s क्या ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू f1 माइनस f0. भाई यहाँ पर भी MVT लगाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम, तो g1 gt 1 minus t, hence f of 1 f of t less than 1, f0 ये हो जाएगा 1 minus t and f1 minus f0 equal to f1 minus ft plus ft minus f0, ये हो जाएगा f1 minus f0 whole into 1 minus t और plus f1 minus f0 whole into t, f1 minus f0. So this is the condition, hence ft minus f0 is equal to f1 f0 to t and f of 1 minus f of 0 less than equal to ft minus f0, that is f1 minus f0 whole into t. So it follows, इससे follow क्या होगा कि ft equal to f0 f1 minus f0 into t. So if f1 less than f0, it is enough to apply for the proof of the function ft. Hence